All are requested to please switch on your videos. So shall we start? Yes, please. Please welcome Mr. Yogesh Verma. Sir, you can start now. Thank you very much. Okay.
Now, today we have another very interesting session, that is managing resources, managing time, and managing priorities. Would request everyone to keep their mic on mute. Uh, you can open your mic when we have the discussions. Okay, let's begin. You can hear the sound, you can see the picture. There's a change in slide. I hope all of you can see that. Yes, journey begins. Wonderful. Okay, let's begin our journey for managing resources, time, and priorities. Wonderful. Uh, Today, let's begin with the definition of, uh, how you manage the resources effectively. Let's see the definition. What books have said. It is not always that what we are taught is the right. Yesterday, I think you all have seen that anybody's belief can be right or wrong. So belief should be based on the fact. Belief should be cross-checked with the fact. So everything, it is not that something is written in the books, so we take it and we take it as a thumb rule. Because it is not that whatever has been said, whatever has been done previously is the right thing. So there are always a scope for improvement, and there are always scope for making things better. Right? So what does the definition says? The definition says stock or supply of money. Stock or supply of money, materials, staff, that is human manpower, and other assets that can be drawn on by a person or organization in order to function effectively. Very simple definition of managing resources. Whether it is a money, whether it is a material, you have factories. I'm sure you also must be having a lot of inventories of materials, and you certainly have a lot of manpower. You have a lot of assets in your organization. So how can we make the best use of these, whatever we have? Like whether we have the time is also you all know that time is also a solid resource, and any material or manpower. How can we make the effective use of what we have? So now it says, understand which resources are in short supply and focus on them. Please get into the definition. It's very, very apt to understand what they are trying to say. They are saying that understand which resources are in short supply. जिसकी कमी है, जिस चीज़ की कमी है आप उस पर फोकस करिए. हाउ डू यू फील दैट? यार आपका फोकस कमी पे होना चाहिए या ज़्यादा पे होना चाहिए? I leave it up to you. It's because there is nothing written on this, so it's a general thinking. Like हमारे पास जब पैसा ज़्यादा होगा तब हम उस पर फोकस करेंगे, या पैसा कम होगा जब फोकस करेंगे? जब कम होगा तो फोकस क्या करेंगे? मतलब we can't effectively use that whatever the left money is.
That is one of the thought. But let's see how it goes. Whether they may be right, or we may have some better understanding. Now, uh, suppose you earn 2 lakh per month, right? Suppose your salary, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 2 लाख पर मंथ है, एंड यू हैव टू बाय 100 ग्राम ऑफ शुगर. 100 ग्राम शुगर खरीदना है आपको. नाउ देयर इज़ अ शॉप अक्रॉस योर हाउस. जस्ट आप बाहर निकले और 4 कदम पे दुकान है. दैट विल गिव यू 100 ग्राम शुगर फॉर 6 रुपीज़, राइट? नाउ a shop is 1 kilometer away, and that will give you at 5 rupees, and there is a 2 kilometer away that will give you at 4 rupees. You are earning 2 lakh rupees per month. Which one? From where will you buy? 4, 5, 6? Shop across our house. Wonderful, wonderful. So that's really what we do, right? Exactly, we do. We do the same thing. And I'm sure 99% of the people will follow this. Wonderful. Now, since you're earning 2 lakh rupees, and 1 or 2 rupees does not make a difference, isn't it? Does it make a difference? No. That's why you are not going for 4 rupees, 5 rupees. So 1 or 2 rupees is not making a difference. Now, if you are earning 2 lakh per month, does 600 or 1200 rupees makes a difference? If you are earning 2 lakh Yes, rupees. it will. Wonderful. Definitely. Definitely. See, what I'm trying to communicate here is, now if you spend 1 or 2 rupees extra thinking, ye kya hai? Nothing, it doesn't make a difference. Yes, stand alone, 1 or 2 rupees does not make a difference. It does not make a difference. Absolutely. But cumulatively, at the end of the year, you will be losing 600 or 1200 rupees as per your consumption. So either you will lose 600 or 1200 कि कितना आपका consumption है. So what I'm trying to say is, now if I do not take care of 1 or 2 rupees, I'm going to have a bigger impact later in life. After some time, I'm going to have bigger impact. That is one example. Second example. When do you drink water? Very simple question. When do you drink water? When you feel thirsty. Exactly. When we feel thirsty. This is exactly what we do, isn't it? जब भी हमें प्यास लगती है, पानी पीते हैं. कोई ऐसा शख्स है यहाँ पे who drinks water when he is not thirsty? I do, sir. Wonderful, Yes. sir. Sir, what's your name, sir? Sukriti Bansal. Sukriti, sir. Wonderful. You see, that's why I said 99% of the people, they go with the flow. But there are some people who are against the flow. I mean, they don't follow what most of the people follow. Now, scientifically, if you ask me, now you see, we have our body, and we have one of the best technical body anybody can think of. मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं that kind of powerful systems we have. चाहे वो आप सर्कुलेटरी सिस्टम ले लो, चाहे वो आप रिस्पायरेटरी सिस्टम का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. यू लीव योर फैन फॉर 15 days, डोंट क्लीन इट. You will find, a dark dust, on the blades of those fans, right? We have been inhaling the same air right from the birth until now. Look at the time, how much we have spent. And you take X-ray of lungs, it is absolutely clear. There is no dust inside the lungs. यार ऐसा कौन सा filtration system है? You see, I mean, we have excellent systems, if we believe in their powers. If we believe in their powers, I mean,
Nobody can match that. Nobody can match that. Similarly, what happens scientifically, the thirst part is not a priority for body. You see? ट्रेनिंग चल रही है HQ Yeah. हाँ good So the thirst. September related Sir, sir, request him to please mute the mic. Yeah, thank you. So, what I'm saying is the thirst is not the priority for the body, because body has got different functions. Priority. See, we are in a session of prioritizing and managing resources and time. So the body's priority is not the thirst. Body's priority is to manage that you think properly. Body's priority is that your circulation system works properly, your kidneys works properly. So that is the priority. So what happens? Body gives a little later response to the dehydration. When your body requires water, as you all of you know that 60% of the body is water. So we have enough of water in the body. So body does not take care of that 10 to 20%. What happens is when 10% to 20% water is lost, then you get the response as that you're thirsty. That means जब आपको थर्स्ट का सिग्नल देती है बॉडी, आपका बॉडी का 10% एटलीस्ट वाटर इज लॉस्ट, देन यू हैव टू rehydrate. Now your body is, as I said, it's very strong. It can manage anything. It can do anything. Like आप देखिए 2 lakh rupees, 1 rupee and 612 rupees. So it can manage. So it will not make a difference. But over period of times, your cells will get little weaker. So you should drink water when you are not thirsty. Don't let thirst come to your body. Don't let the thirst signal come to your body, and keep yourself dehydrated before body tells you. And you see the difference. In your energy levels, in your activities. You will find entirely different. Okay, another example. Now you have this wonderful grass field, right? And at the same time you have this dry field, right? Absolutely dry. Now you are given one option to water. Which field would you choose to water? Green or dry? Green or dry? green Green. Oh. the green one Oh. Why not dry one? because there are no vegetation which will Yeah, sprout it's up. only dry. So if you water it, it will also turn green. But never mind. I think you hit the nail. You hammer on the nail that you would like to water green instead of dry fields, instead of making a dry green again. You would like to hold on to the green. Don't let it dry. You see, can you link your definition, resource management definition? It says that you focus on the material or stock or money or whatever it is when it is in short supply. It does not matches here. You are focusing on the green field rather than the dry field. Right? वो इतना stock supply कम हो गया कि वो एकदम dry हो गया. So now you are not focusing at all. So what you are focusing on the green field.
When the sun is shining, you are Yeah, but focused. we are here, we are focusing on the resource which is water. Yeah, And maybe if we have a choice to put that to use, yeah. then we are rationing it to the area which is already green, and it will go dry if we are not watering it. Exactly, sir. Exactly. That's what I'm saying. That's exactly what I'm saying. If I do not save 1 rupee, I am going to lose 1200 rupees, boss. Exactly. You see, all these examples are bringing your thinking to one place. If I do not take care of the green grass, it is going to dry. If I do not take care of the 1 rupee, it is going to, I am going to lose. The time will come that I may have a short supply of money. I may have a short supply of money if I do not. I'll give you another example. Ah, the beautiful lady is in the hospital. I'm sure you should never have been to the hospital, but if you fall ill, whatever, yeah, even if you have a fever and all that, you take care of your health. When you're lying on the bed, even if you're having, say, 102-degree fever, you're feeling so weak and all that, and what thought comes to your mind? यार मैं एक बार ठीक हो जाऊं, बस उसके बाद देखना. Isn't it? Do we do that? When do you take care of your health? When you are ill. हम सारे प्रिकॉशंस तब लेते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं. कोई ठंडी आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडी बियर नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, कुछ नहीं करना, only till we are ill. The moment we recover, we start doing the same thing. Do we do that? Yes or no? When do we take? Yes, sir. Yes, exactly. So when do we take care of our health? When we are ill. No. That is not the right thing to do, my dear friend. You should take care of your health when you are healthy. When you are healthy. Are you getting something? Because it's something different. Huh? Yes. Yes, please. Yes, sir. 100%. 100%. Exactly. So we should take care of our health when we are healthy. आज मैं मेरे हाथ पाँव बिल्कुल सही चल रहे हैं. मैं बिल्कुल I can do exercise. I can cycling, jogging, everything I can do. I should do it now, Baba. Not at 65 or 70 when my knees say, oh, yeah, there is a pain in my knee. I cannot even walk. Oh my God. So what will happen is, if you will not take care of your health when you are healthy, you are bound to get disease. Can you compare? If you do not take care of the resources when they are abundantly available to you, they are bound to get depletion होगा उनका. If you do not take care of the money when it is in excess with you, you are going to lose money one day. आपको पता नहीं चलेगा, because it's so small. एक बूंद पानी में से निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ता है? That's exactly what happens. एक एक बूंद करके, हम तो जानते हैं, एक एक बूंद करके घड़ा भरता है. So I think this is my view. It has not been written in any of the book. it is not there. The first which I shared with you, that is the definition of the book. So resource management is, you please focus on the resources when they are abundantly available to you. Oh, sorry, when they are in short supply. But this is my view, that when resources are in abundantly available with you, please focus on them. Please focus, like your health, like your thirsty. If you don't let your body be thirst, your body will praise you. ये वो बोलते हैं ना, दुआएं देगी वो बॉडी, आपको दुआएं देगी. वो 10% जो सेल मरते हैं, लिविंग थिंग ना, सेल इज़ अ लिविंग थिंग. तो जो मर जाते हैं, दे विल टेल यू, अरे बहुत अच्छा किया आपने हमको मरने से बचा लिया. सो दैट इज़ हाउ द बॉडी विल ऑल्सो सपोर्ट यू.
right? So this is my view. So you can accept it, you can put it in your life, you can put it in your day-to-day working, or you can follow the book definition. Absolutely no worries. And ये भी एक कहावत है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो हम तभी फसल काटते हैं जब हमारा सन शाइन कर रहा होता है. ओके. So this was on the resource management. Now, I want to ask you, till now, till now, what is the best gift you have got or you have given to somebody? Till now, anybody, what is the best gift you have got it or you have given to somebody? Smile. Smile. Okay, wonderful. Wonderful. Smile. Time. Huh? Time. Time. Who is this person, please? Please name yourself. Time. Ahmad Jafar. Huh? Ahmad Jafar. Jafar, sir. Mr. Jafar says time. Does something click on you? Somebody said smile. Yes, he's absolutely right. Nobody said money. Okay, because we don't feel money is is a gift. And as Mr. Jafar and somebody else also mentioned, that the most important gift we have given to somebody is time. And I think he's absolutely on dot. That like, take an example of your parents, your older parents. What do they need? Do they need fancy clothing? No. They like, if your father is like 70, 75, he will need just one khadi ka kurta pajama. That's all. Not much. Maybe a few shirts and pants. Not much. Do they need a huge bungalow to stay? Absolutely no. They would require just one room, and to move around. That's all. Do they need any iPhone 13 or LED TVs or something? Absolutely no. Absolutely. They don't require all these things. All these materialistic things. Absolutely, they don't require. What they require is that their children should stay with them. Their children should talk to them. I have seen, parents. There is one known person to us. He is about 90 to 92 years of age. He doesn't want anything. कहता मेरे को कुछ नहीं चाहिए. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा आए और मेरे पास आधे घंटे बैठे. That's all. That's what I want. और मेरे से बातें करें. Finish. उनको बात करने वाला चाहिए बस. मतलब उनको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. खाना भी मत दो. वो बोलते खाना भी मेरे को नहीं चाहिए. लेकिन मेरा बेटा या मेरी बेटी या बहू या बच्चे पोता पोती, whosoever is, they should come and sit with me and talk to me. That's what they want. So I think अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो अपना समय दीजिए. Give time as your give yourself to them, right? So even our loved ones, you ask them, see, it's a materialistic world. So अगर आप अपने बच्चे से पूछो क्या चाहिए, maybe he will say पापा मेरे को वरना कार चाहिए, या मेरे को iPhone 13 चाहिए. He might say, but at the back of his mind he will not want these things over your time. You have seen people are struggling throughout their life. और हमने भी किया है. We have also made a mistake. When we were young, we didn't realize यार कि भाई time जा रहा है. See, time same speed से जा रहा था, लेकिन हम इतना तेज दौड़ रहे थे कि टाइम भी हमारे साथ तेज दौड़ गया और ख़त्म हो गया. हमें पता ही नहीं चला कब हम 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से अब 60 होने वाले हैं. So टाइम फ्लाइज बॉस, टाइम फ्लाइज. तो आप इसको, जब तक आप इसको ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आप इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लव्ड वंस, अपने करीबी and your people in organization, so many a times they need you
they need your presence, you know, कि आप वहाँ पे होंगे, आप अपना टाइम वक्त देंगे, you know, so they may have much better you know, outcome. So the most important resource in our life is time. There are few a few attributes of time, and what is that? Time is free. It doesn't cost money. It doesn't cost money, right? You agree? Time is free. चलता रहे, चल रहा है, मतलब, you know, you have 24 hours, I have 24 hours, so everybody is given the same time by the God, but it is priceless. आप खरीद ही नहीं सकते इसको, मतलब प्राइस ही नहीं है कोई इसका. यू कांट बाय. आप 5 मिनट बोलो यार 5 मिनट बीत गए, आई वॉन्ट टू बाय दैट, यू नो, या दोबारा से हो जाए, नहीं होगा सर. वंस यू कांट कीप इट, बट यू कैन स्पेंड इट. देखो, इट्स वेरी सिंपल. आप टाइम को रख नहीं सकते हो, यू नो, यू कांट स्टोर. लाइक मनी को आप रख सकते हो, यू नो, गाड़ियाँ खरीद के रख सकते हो, घर खरीद के रख सकते हो, बट वक्त नहीं रख सकते बॉस. You know, you'll have to spend it. There's no other way. Force. There's no option. There's no option than spending the time, and that makes it so important that you spend time wisely. You spend, because you know, who is the winner? The winner is who is taking the best advantage of the time. He's the winner. जो time waste कर रहा है, जो time wisely spend नहीं कर रहा है, you know, he will lose out, because everybody has got the same time. It's a very equal playing field, and this is very apt. Once you have lost it, you never get it back. You never get it back. You know, we think, you know, okay, we are working, we are going out, this, that, flana, we lose family, you know, family is home, we are traveling, yeah, wo, for earning money and this and that, and a lot of people do that, you know, and their children are waiting कि पापा कब आएंगे and all that stuff. So you have seen those kind of stories. So, you know, yes, we need you know, money to survive, or to stay, or, you know, to fulfill our needs, not desires. Desire हमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है, you know, like I need a house to stay, you know, so 2-bedroom house, 1-bedroom house is good enough, you know, for husband and wife to stay. But desire is that I should have a bungalow. Now that's not acceptable, right? So you know, you should be able to fulfill your needs, and believe me, money can't buy you happiness. You know, when you spend money, that buys you happiness. You know, the earning of money is not happiness. The spending of money is the happiness, right? So when you spend money, and when you spend wisely, you know, you get more happiness. Like, I'll give you an example. Sometimes, you know, we go to 5-star hotel, and you know, we have food. You know, we spend thousands of rupees, 10,000, 20,000 rupees, you know, having 4 or 5 people dinner. We might enjoy, you know, the ambience and this and that, and sometimes we, if anybody is from here, from Amritsar, or you know, anybody who has visited Amritsar, and he had the Tyal Singh Dhaba's dal, you know, he's a famous dhaba in Amritsar. आप उसका दाल और खाली ही में, अर्लियर ही यूज्ड टू मेक्स ओनली दाल एंड रोटी. आप वो दाल और रोटी खाइए, एंड यू विल फील लाइक यू आर ऑन द 7th वर्ल्ड, you know, you're on the top of the world. You know, the taste what you get there is excellent, So what I mean to say is that even if you spend 100 rupees, the happiness what you get is much higher than when you spend thousands of rupees. You know, आप बोलोगे यार मज़ा नहीं आया यार, साला 10,000 रुपये लगाया, लेकिन खाने में वो स्वाद नहीं आया, you know, something like that. So spend money wisely. Okay. Now it's a question of spending this, you know, spending this useful resource, you know. So I say that my day has 27 hours. How many you have? Now we have been telling that you know, it's 24 hours, and everybody will say yes, it is 24 hours, and I also say it is 24 hours. I have been saying that, you know, everybody has got equal hours, but can you make it 27? Can you make it 27? You know, just an example. Can you make it 25, 26, 27? Can you make it? Yes or no? No?
Yes? Anyone? Anyone? Fastest buzzer round. Whosoever open his mic and says yes, no. I think sleep less for 3 hours, then it will make up. You can make it today, 24 hours. I think you are. Sleep 5 hours. I think you are on the dot. You're on the dot, but yes, not sleep. Your half part is absolutely you're on target. But I would never say to compromise your sleep. Let's say, is time money? Do you believe time is money? Yes, no. Yes. Yes. Right. Wonderful. So we believe time is money. We believe time is Yes, money. yes. Yes. Absolutely. We believe time is money. Do we waste money? कचरे के डब्बे में पैसा डालते हैं क्या? No. हाँ? Do we waste money? Forget Sometimes. about sometimes okay. आप जरा याद करिए आपने कब वेस्ट मनी किया. कैन यू गिव एन एग्जांपल कब वेस्ट मनी किया आपने जानबूझकर? मतलब सी एक होता है कि मैंने कोई चीज़ खरीदा अच्छा नहीं निकला वेस्ट हो गया. नहीं वो नहीं. मैं जान रहा हूँ कि गड्ढे में जा रही है पैसा. ये पैसा मेरे को वापस नहीं आएगा और फिर भी स्टिल आई एम वेस्टिंग मनी. लाइक जैसे सपोज मेरे को पता है कि मैं सामने चल के जा सकता हूँ 5 मिनट में, बट एक टैक्सी वाला मेरे से 1000 रुपये मांगता है और मैं उसको 1000 रुपये प्यार से दे देता हूँ जानते हुए. आई नो कि आई कैन वॉक, आई कैन मतलब एब्सोल्युटली मेरा कोई टाइम का शॉर्टेज नहीं, कुछ नहीं, आई कैन वॉक एंड स्टिल आई हायर दैट कैब. दैट्स वेस्ट ऑफ मनी. हैव वी डन दैट? डू वी डू दैट नोइंगली? No. Never, absolutely never. See, if I know, now this is kind of a luxury. See, you can travel. You want to travel from Delhi to Bombay, right? You can go in second class. 300, 600, 500 रुपये जो भी लगेगा. You can go in second AC, third AC में राजधानी में जाएंगे 2500, 3000. Second AC में जाएंगे 4000. You can go a flight also. You can take 6000, 7000. Now, these are different luxuries, isn't it? These are different luxuries. हाँ, आपको जल्दी पहुंचना है, आपको comfort चाहिए. No, that's not waste of money. Okay, believe me, because you are earning and you are buying the comfort, you are buying the luxury as desired by you. So that's okay. But knowingly that in second class I can go in 600 rupees, but I buy a ticket from the agent, and knowingly I am getting a ticket and I am paying him 1200 rupees. Very well knowing that 600 में मेरे को ऑनलाइन IRCTC में मिल जाएगा, but still I pay him 12. That is waste of money. We don't do that. We will never do that, isn't it? So when we believe time is money and we don't waste money, then why do we waste time? Why do we waste time? Imagine आप हम सब ने, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिक है. Some unique person is there. Everybody, including me, you, third person, 14%, 15%, everybody, some other time he waste time. कभी ना कभी तो waste time करता है. And we also do that. Now remember, this time is not going to come back. Now first, we have to utilize our 24 hours in the best possible way. And second, can we increase time? And as somebody has mentioned that yes, if I cut down on my sleep, I will increase time. But I will never ask you to cut down on your sleep. Now let's see how can we increase time. Now let your salary be 100. In your salary, say it is divided. Fixed expenses like your house rent and school fees and all that stuff is 50 rupees. Variable expenses is 30 rupees and 20 rupees you save. Say for example. Now, how can you make 100 to 110? If you get an increment, that is one way. So अगर आपका increment हुआ तो आप 100 को 110 में ले जाएंगे. एंड अगर आप 100 को 110 में ले जाएंगे तो वो 10 रुपीज वेयर विल यू पुट? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेविंग?
savings. Mostly. So 90-95% of the people will put in savings. Somebody will say I'll 5 रुपया saving में डालेंगे, 5 रुपया variable में डालेंगे, something like that. So now you will put in savings, so your saving will become 30, extra income 10, and that goes to saving, and 100 becomes 110. That is one way of increasing your 100 to 110. Now there is a second option. If you reduce your variable expenses, right, from 30 to 20. वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सा होता है? वेरिएबल एक्सपेंसेस जो मतलब फिक्स नहीं होता है, जिसका ज़रूरत नहीं होता है, लाइक ओके, आई वांट टू गो एंड हैव पार्टी विद माय फ्रेंड्स, आज विल गो आउट एंड हैव ड्रिंक्स आउटसाइड, दैट इज़ वेरिएबल एक्सपेंसेस. आप खाना खाने चले गए, कपड़े आपने, आजकल तो बहुत है, 20 शर्ट पड़ी हैं बट स्टिल यू बाय अ शर्ट, फाइन, आई मीन that's okay, there's no harm in that. So that's a variable expenses. So अगर आप वेरिएबल एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं तो आपका वो 10 रुपीज़ आप सेविंग में डाल सकते हैं, जैसा आपने 110 होने पे किया था. सेम रिजल्ट यू कैन अचीव if you reduce your variable. So similarly, if you want to increase 24 to 27 hours, what you need additional 3 hours. and अगर आपका फिक्स टाइम 12 hours है और वेरिएबल टाइम 10 hours है, जो रिमेनिंग टाइम आपका 5 hours है, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल में फोकस करना है. सी, जो आपका स्लीप है, दैट कम्स इन योर फिक्स टाइम. Sleep comes in the fixed time. So never compromise on the fixed time. So never compromise on your sleep. What may come, I'm telling you. मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन but this is the fact. ये मेरे साथ हुआ है और मतलब I have witnessed it. Never compromise on sleep. So you can make 24 hours to 27 hours if you reduce your variable time. And we will see what is this variable time, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, how can we do that. Now I'll give you one very simple exercise. So you have to do that exercise. What you have to do is, you don't have to open your wallet or purse. आपको खोलना नहीं है, अब इसको बंद ही रखना है. नंबर 1, अपने नोटबुक में आपको लिखना है याद करके कि आपके पर्स में कितना पैसा है टोटल. Only you can put the notes, no need to count the coins, only the notes. आपके पर्स में कितना पैसा है, आपके पर्स में 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स, नॉट द विजिटिंग कार्ड बट द प्लास्टिक कार्ड, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, और कुछ आपका ताज का कोई कार्ड हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, और स्पाउस का मोबाइल नंबर आपको लिखना है. ये 4 चीज़ें आपको करनी है. सो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग कि नंबर 1 टोटल मनी कितना है, नंबर 2 रिमेंबर 100 रुपीज़ का नोट्स कितना है, याद करके लिखना है, और नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, और स्पाउस का मोबाइल नंबर लास्ट में लिखना है आपको. वंस यू हैव डन दिस, ओपन योर वॉलेट एंड क्रॉस चेक इट. सो इफ़ योर टोटल मनी इज़ एज जितना आपने लिखा है उतना ही है, 10 मार्क्स दे दीजिए. नंबर ऑफ 100 रुपीज़ का नोट्स आपने लिखा 5, आपके पर्स में भी 5 है, आप 10 मार्क्स दे दीजिए. नंबर ऑफ कार्ड्स अगर आपने 3 लिखा है और 3 ही है तो आप 10 मार्क्स दे दीजिए. स्पाउस का मोबाइल नंबर अगर आपने सही लिखा है तो आप उनको 10 मार्क्स दे दीजिए. दैट मीन्स टोटल 40 मार्क्स आपको मिलने चाहिए अगर आपके चारों जवाब सही हैं. तो काइंडली डू दिस एक्सरसाइज एंड प्लीज़ लेट मी नो योर स्कोर. Score? 40. Huh? Somebody said 30. 30. किस में मार्क्स मिस हुआ आपका? Total amount 100 rupees. अच्छा, 100 रुपीज़. Okay. Anybody has got 20? Anybody has got 20? You can also write in your chat your score, no problem. If
you are not able to unmute your mic, you can write in the chat. Okay, no worries. Now, uh, this is nothing but to make sure that how organized you are. How organized you are. Now, because being organized is the key to your 24 to 27 hours. 24 to 27 hours. That's the key. Let me give you an example. Now, this is a Mumbai traffic. I'm sure a lot of people would be from Mumbai. If yes, no problem. But this is the Mumbai traffic. I want to know how many of you would like to be in this traffic? Would you like to be in this traffic? Yes or no? It's pretty organized, but it is still a very heavy traffic. Yeah, it's very heavy traffic. Yeah, absolutely. It's heavy, very heavy traffic. And like somebody said no very strongly. Absolutely. You would who would like to be in this traffic? No, nobody. Correct? Is there anybody who would like to be in this traffic? No. All answers I'm getting no. So there is nobody who would like to be in this traffic. Now you see how the change will happen. आप देखिए how your thought process will change. Immediately you will change your answer. Now this is a kiosk. I don't know the place, but there's some place in south. The person from south might recognize the place. I don't know. Vaisala कुछ लिखा है वहाँ पे. Now this is a kiosk. This is a Kerala. Okay. Vaitla. Ernakulam. Okay. Vaitla. Okay. Wonderful. Thank you, sir. So this is a kiosk. Now यहाँ पे पता नहीं आप कितनी देर आप खड़े रहेंगे. कौन कब निकलेगा, फंस गया, क्या है पता नहीं है. Now you tell me, if you have an option, would you like to be in Kerala or Mumbai? In Mumbai. Kerala. Mumbai. सर ये Mumbai. सर अपना स्टेटिज्म Mumbai. Decent, no, sir. We will stay there only. Huh? You stay there? No, it No, doesn't sir. matter. If it is traffic, it's a decent way. Mumbai is decent, no, sir. I didn't get you what you're saying. But what happens is, now you see the difference between these two. What I want to communicate here to you is that this is an organized traffic. The organized, at least चल तो रहा है, मतलब चलता है. अब देखिए ना, एक के पीछे एक लाइन लगी हुई है यार. आखिर तक आप देखेंगे ना, एक के पीछे एक गाड़ी है. मतलब इतना सिंक्रोनिटी. मतलब बॉम्बे वाज नोन. आई रीच्ड बॉम्बे in 1976 एंड आई वाज टोल्ड कि अगर आपको सीधे जाना है तो आप मिडिल वाली लाइन में ही खड़े रहेंगे, राइट में आएंगे ही नहीं, चाहे आपकी गाड़ी के आगे 50 गाड़ियाँ हों. एंड आई हैव सीन विद माई आइज इट हैपन्स. अगर आपको सीधे जाना है और मिडिल की लाइन में आपको खड़ा होना है तो 50 गाड़ी आपके आगे हैं, तो आप यू विल बी द 51%. इट डजेंट हैपन इन दिल्ली और एनी अदर प्लेस. वो सारा सीधे जाने वाले राइट में खड़े हो जाते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन, राइट. बट दिस इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक आई हैव सीन, दैट आई हैव सीन इन मुंबई and Delhi and other places is absolutely chaos. So I would not like to be in a traffic which is chaos. So I would like to be in a traffic that is organized. Now the same thing is with your life. Even if you are struggling, or you have less space, you have less time, be organized. I'm sure you will move. You will not be standstill. If you are unorganized, then there are chances that I don't know, God knows only when the things will improve. And I'm giving you one hint that ये जो डिसऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, अपने घर में भी, आप कहीं भी हों. से आपने कोई चीज़ निकाली, कुछ भी निकाला, उसका काम हुआ,
और आप उसको वापस वहीं पे रख दिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपने कोई चीज़ निकाली, काम हुआ, और उसको आप दूसरी जगह रख देते हैं जो उसका प्लेस नहीं है, एंड यू से अभी रखता हूँ, अभी रख दूंगा. अपने आप से बोलते हो, किसी को बोलते नहीं हो. वैसे तो कई घर में वाइफ्स आर वेरी स्ट्रांगली डोमिनेटिंग, सो दे से जहाँ से चीज़ उठाया वहीं पे रखना है, नहीं तो फाइन होएगा एंड ऑल दैट स्टफ. बट दिस इज़ वॉट यू टेल टू योर सेल्फ, मैं अभी रखता हूँ. ये जो मैं अभी रखता हूँ ना, दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन. सो इफ यू पिक अप समथिंग फ्रॉम वेर एवर यू हैव पिक्ड अप, प्लीज कीप इट वंस द वर्क इज डन, राइट? सो बी ऑर्गेनाइज्ड, बी ऑर्गेनाइज्ड. नाउ let's cross check the our 24 hours. What is how do we spend our 24 hours, and what are the tasks which we do in 24 hours? Now this will help you to that आप अपने 24 hours को 25 बना सकते हैं, 23 बना सकते हैं, 22 बना सकते हैं, या 27 या 28 बना सकते हैं. सो दिस विल हैव, एंड दिस इज़ अ जेंटलमैन कॉल्ड स्टीफन कोवाई. स्टीफन कोवाई एक ऑथर थे जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट का क्वाड्रेंट दिया. दिस इज़ द टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट. ये एक ग्राफ की तरह होता है, जैसे आपने देखा होगा ग्राफ्स जो होते हैं. सो इसके एक एक्सिस पे इम्पोर्टेंस है, जो वाई एक्सिस है, दैट हैज़ द इम्पोर्टेंस. नीचे इसका लो इम्पोर्टेंस है और ऊपर इसका हाई इम्पोर्टेंस है. और जो इसका एक्स एक्सिस है, दैट हैज़ द अर्जेंसी. सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, दैट इज़ अ हाई अर्जेंट, एंड द लास्ट क्वाड्रेंट जो है वो लीस्ट अर्जेंट है. नाउ तो इसको क्या किया है, दे हैव डिवाइडेड, स्टीफन कोवाई हैज़ डिवाइडेड दिस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स इनटू 4 quadrant. Now the first quadrant is the task which are high importance and high urgency. Now please imagine, I would like you to imagine any task. अगर आपके साथ हुआ है फाइन, अगर नहीं हुआ है आप सोच सकते हैं कि ऐसे इसके अंदर क्या आ सकता है विच इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट. मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इतना इम्पोर्टेंट है. अगर ये काम नहीं हुआ तो आपका पर्सनल है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, अगर नहीं किया तो मतलब जान जा सकती है, समथिंग लाइक दैट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस. अर्जेंसी मतलब टाइम नहीं है, मतलब यू कांट ये कल करूँगा यार, मतलब शाम को कर दूंगा या लंच के बाद कर. नो, राइट नाउ, अब भी ही करना पड़ेगा. विच आर दोज टास्क? कैन यू थिंक ऑफ एनी टास्क? यू कैन स्पीक, यू कैन राइट. विच आर दोज टास्क इन आवर लाइफ विच आर हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली अर्जेंट? करना ही करना है, आई हैव नो ऑप्शन. मतलब मेरे को सारे काम छोड़ के वही करना है. यस प्लीज. मेडिकल इमरजेंसी, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको अपना इलाज करवाना पड़ेगा. वंडरफुल, ब्यूटिफुल. सो दैट काइंड ऑफ टास्क, लाइक किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो वी हैव टू टेक हिम. मतलब वी कांट से कि शाम को आके मैं लेके जाऊंगा, नहीं, वी हैव टू गो इमीडिएटली एंड टेक द एक्शन. कोई क्राइसिस हो गया, जैसे आई वॉज देयर इन वंस योर बॉम्बे हेडक्वार्टर, वेस्टर्न रीजन हेडक्वार्टर. सो दे वर हैविंग अ फायर फाइटिंग ड्रिल. सो जैसे आग लग गई, गाड़ी बिल्डिंग में आग लग गई, सो यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन, राइट? सो दोज काइंड ऑफ क्राइसिस सिचुएशन जो होती हैं, दैट विल फॉल इन क्वाड्रेंट 1 एंड दैट इज़ हाई इम्पॉर्टेंट एंड हाई अर्जेंट. तो इसका एक्शन क्या होता है? इसका एक्शन कुछ नहीं है, वी हैव टू डू इट राइट अवे. मतलब हम इससे भाग नहीं सकते हैं, देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वाड्रेंट. नाउ द सेकंड क्वाड्रेंट सेज, द सेकंड क्वाड्रेंट is
the task is important, very important. मतलब it is not मतलब lightly नहीं लेना आप उसको, it's very important, but urgency is low. मतलब I have time. देख, see, you can think that the first quadrant जो था उसमें मेरे पास टाइम नहीं था, I had to do. लेकिन यहाँ पे टास्क वही है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पास टाइम है. Can you think of any of the tasks which are highly important to you as a person or to the organization? They're very important, but you have time to do. You have Filing time. the income tax return after getting the Form 16. Filing the income tax return. Okay, yeah, ठीक है. That's a valid thing. Anybody else? Anything else which is more important than income tax return? मैं अगर एक बार income tax return नहीं फाइल करूँगा मेरे को Health. हाँ? Taking care of our health. ये साहब ने बताया, taking care of the health. Wonderful, sir. Success in health and fitness and all that stuff. Health. Now, again I am coming back to the thirsty body and the healthy body, the green grass. I'm sure you will remember. You will not forget in your life that you have to water the green grass. You will not forget in your life that you have to take care of your health when you are healthy, right? Not that when you go to the doctor and then you start planning कि मेरे को अब क्या करना है. So that is the time you have to take care, right? So for health, if you have to do recreations, you have to do mountain climbing, or you have to do some excursions, you have to go for a family trip and all that. All these are very important tasks as far as your life is concerned. So you must do it, right? So you should not because you have time and you can do it, isn't it? Now what will happen if you do not take care of your health when you have time? मतलब when I am healthy, अगर मैं अभी हेल्थ के अपने ध्यान नहीं रखता हूँ, tomorrow I will have no time, and if tomorrow I'll have no time, it will become crisis. My second quadrant will go to the first quadrant. Same thing. अगर मैंने आज अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, tomorrow I am going to be ill. पक्का. Now please don't blame coronavirus or anybody else for your health. You are responsible for your health. You are responsible because God has given you a fantastic body. उसका सिस्टम आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये ठीक नहीं है. एवरीथिंग ही हैज़ गिवन यू. जैसे 24 आवर्स दिया है, सब बंदों को एक ही सिस्टम दिया हुआ है. कोई उसको अच्छा बना लेता है, कोई उसको ख़राब कर देता है, राइट? सो माई एडवाइस टू यू इज़ दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ व्हेन you are healthy. Otherwise, if you do not focus on these tasks, right? So this is one of the personal thing, right? Second, example is like when you have exams. Say a student have exams next year, right? In month of April, right? Now today is say August, so next year April. So now you have to take care of the study right now, right? When you have time. Right? Not that when your 4th April and 5th April को exam है, you start studying on the 4th April, right? So that will not work out. So that becomes a crisis. अब तो crisis हो गया, अब तो किताब खोलना ही पड़ेगा, something like that. So if you focus now, अगर आप इस quadrant को भी mark कर लेंगे ना अपनी life में, आपका टाइम कहीं जाएगा ही नहीं. मतलब आप 24 को 27 के 28, 29, 30 भी बना सकते हैं, राइट? अगर आप इस क्वाड्रेंट में फोकस करें तो. नाउ देयर इज अ थर्ड क्वाड्रेंट. व्हाट इज दैट थर्ड क्वाड्रेंट? इंपॉर्टेंस इज लो. मतलब आप सोचिए ऐसे काम जिसके इंपॉर्टेंस बहुत लो है, मतलब इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अर्जेंसी इज हाई. मतलब टाइम नहीं है.
लेकिन काम नहीं करेंगे तो मतलब ऐसा कोई आफत नहीं आएगी, ऐसे कोई टास्क, कैन यू इमेजिन? Can you imagine anything which has a low importance but urgency is high? I can't do it tomorrow. आज ही करना पड़ेगा, हो सकता है अभी करना पड़ेगा, you know, something like that. But importance is low, not so important to me, to my life, to my organization, not much. Can you think of anything? हमारे पर्सनल बिल्स जमा कराना, Personal? छोड़ना। बिल्स जमा कराना, हाँ, bills जमा, बिजली wonderful. पानी का बिल। Oh, wonderful, sir. Wonderful, wonderful, wonderful. I mean, these kind of tasks, you know, like exactly bill payments, mobile, electricity, water, insurance, all that stuff. You know, bill payments हो गया, messaging हो गया. You know, so these are the tasks. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक महीने वाटर का बिल नहीं भरा तो मेरा पानी कट जाएगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा, यू नो, 100 रुपया फालतू लगेगा, दैट्स ऑल. तो इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि मेरे को ये ना अभी करना ही करना है, मतलब ये मेरे को करना ही करना है. सो अगर मैं नहीं भी भरूंगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. नाउ इफ़ आई हैव द अर्जेंसी, व्हाट कैन आई डू? नाउ सपोज आई डोंट वांट टू डू दीज टास्क, सो व्हाट कैन आई डू? इफ़ I can delegate. सर क्या बात है, यू आर वंडरफुल सर. सो रिमेंबर इन लाइफ, आप जब भी कोई काम कर रहे हो, वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग, प्लीज थिंक, कैन somebody else do this? Can somebody else do this what I'm doing? You know, if you want to save, if see what we are working on, we are working on saving time. We are working on saving time. Now अभी तो खैर इतना नहीं है, अभी तो आपको सिर्फ 5 मिनट मोबाइल ऐप पे जाना होता है एंड यू कैन पे द बिल. आई रिमेंबर यू नो, जब हम एक घंटा लाइन में खड़े होते थे, पानी का बिल, बिजली का बिल, MTNL फ़ोन का बिल, यू नो, ये 3-4 बिल होते थे, जो एक टेंशन होती थी कि यार ये बिल पे करना है, और लंबी लाइन होती थी, यू नो. तो वहाँ हम घंटों लाइन में खड़े रहते थे एंड वी यूज टू पे द बिल. सो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स अ वेस्ट ऑफ. सो आई कैन आस्क समबडी, पे ₹50, यार तुम जाओ, 50 रुपये दे के मैं 1 घंटा नहीं खरीद सकता हूँ, मैं कितने भी पैसे दे के 1 घंटा नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन 50 रुपये दे के मैं डेलीगेट करके आई कैन सेव दैट 1 आवर एंड आई कैन यूज दैट 1 आवर, हाफ एन आवर, और इवन 5 मिनट्स. यार व्हाई नॉट? यू नो, आपने देखा होगा एक ऐड भी आता है, एक मदर कहती है, वो आपने बिल दे दिया, वो ब्रदर जो है उसका टक 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 करके बिल पे करता है, राइट. सो अगर आप सोचते हैं कि आप आपका ये बिल कोई और भर सकता है, गिव हिम डेलीगेट. यू नो, आपका कोई काम, ऐसा काम जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिमेंबर द फर्स्ट थिंग इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट काम को डेलीगेट नहीं करना है, ऐसे काम जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कोई और कर सकता है. सो थिंक कि एनीबडी कैन डू. सो ये जो काम है आपके क्वाड्रेंट 3 वाले, आपको नहीं करने. यू आर गेटिंग मी? क्वाड्रेंट 3 वाले काम आपको नहीं करने, आपको डेलीगेट करने हैं, राइट. सो start delegating. Delegation is also an art. You know, that how you delegate work to the people so they do it willingly. Now the last quadrant is absolutely, which is not at all important, मतलब उसका इम्पोर्टेंस तो है ही नहीं, and urgency भी नहीं. Can you think of those work? Can you think of those any work which is not important, not urgent? Time ही time है. You have time to do that work. Lot of time to do that work. Watching movie. Watch movie, wonderful sir. Watch movies, watch serials, and all that stuff. Wonderful. You're absolutely right. You know, watching movies, serials, and all that, and also, also this. सोशल मीडिया, ओ माय गॉड, इट इज़ एडिक्शन. और आजकल तो ये मतलब ऐसा हो गया है कि पीपल को पता ही नहीं चलता है. यू नो, यू आर देयर. आप फेसबुक में अगर आप घुस गए एक बार और आप शुरू हो गए, यू नो, चलते आप कब कितना आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा.
आप व्हाट्सअप ग्रुप में कुछ एक कमेंट डाल दीजिए, आजकल तो बहुत होता है, यू नो, अगेंस्ट बीजेपी या अगेंस्ट कांग्रेस या अगेंस्ट हिंदू, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, विच आर हैपनिंग. सो अब एक बार डाल दीजिए एंड आपका 1-1.5 घंटा पक्का आप, यू नो, आप डिस्कशन करते रहेंगे. नेट में नेट रिजल्ट ज़ीरो, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, ओनली डिस्कशंस, राइट. सो यू नो, बी अवेयर ऑफ द सोशल मीडिया, be aware of your time wasters, be aware of your distractions. This kind of thing, what you should do, these kind of tasks, what you should do, low important, low urgency, you should avoid. Now, जैसे सर ने बोला कि watch movie. Now, if watching movie is my recreation, it is high importance, urgency low. Please don't get me wrong. I am not discouraging you to go away from entertainment. Never. Please don't go from, because I'll come to you know, there is a slide which will explain much better, but still I don't want you to carry a wrong impression that entertainment in life is important, because to keep you healthy. Now I'll give you an example, like what I used to do. I'm 63 born. So 1976-77 में मतलब ट्रांजिस्टर रेडियो होता था उस वक्त, ट्रांजिस्टर उसके बाद आए थे, तो रेडियो के कान लगा के हम कमेंट्री सुन, आई यूज टू लिसन कमेंट्री, यू नो, क्रिकेट का इतना शौक था. और उसके बाद, यू नो, मतलब आई डोंट रिमेंबर आई वुड हैव मिस्ड एनी वनडेज और यू नो ऑल दैट स्टफ. उस समय होते भी बहुत कम थे, आज की तरह नहीं इतने ज़्यादा, तो मैंने कभी मिस नहीं किया. एंड आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट. नाउ व्हाट हैपेंड, माय सन ग्रू अप एंड ही इज़ अ सॉकर प्लेयर. He likes soccer. He's a Chelsea fan. So all these Europe, मेरे को तो पता भी नहीं था, मतलब जब उसने देखना शुरू किया तो मेरे को पता चला, अच्छा यूरोपा लीग होता है, यू नो, कुछ ऐसे लीग्स होती हैं, चेल्सी है, पता नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, उनके नाम भी नहीं पता थे मेरे को. सो जो भी ये ऐसे टूर्नामेंट्स होते थे, ही यूज्ड टू वॉच. नाउ वी हैव वन टीवी. सो नाउ अगर क्रिकेट मैच आ रहा है और सॉकर मैच आ रहा है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट मैच, लेकिन माई सन इज़ इंटरेस्टेड इन सॉकर. नाउ व्हाट आई डिड इज़, नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आई एम वॉचिंग सॉकर और आई एम वॉचिंग क्रिकेट. what is important is that my family is watching together. That is more important, right? So you know, either son can see cricket match which he is not interested, or I can see soccer which I am not interested, you know. तो somebody will have to, किसी एक को लगना पड़ेगा. तो मैंने कहा यार ठीक है यार, सारी लाइफ हमने क्रिकेट सुना है, तो अभी क्या है, सो लेट मी वॉच सॉकर. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग सॉकर विद हिम, एंड बिलीव मी, इतना इंटरेस्ट आया ना मेरे को सॉकर में, मतलब आई फॉरगॉट क्रिकेट. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. हाँ, मतलब इट इज़ नॉट, मतलब ये मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, दिस इज़ अ रियल थिंग. मतलब आज मैं वनडे देखता ही नहीं, IPL मैं देखता ही नहीं. अगर माई सन इज़ एट होम एंड इज़ देयर एनी सॉकर टूर्नामेंट, आई लव टू वॉच दैट 90 minutes थ्रिलिंग मैच. मतलब वो ये जो क्रिकेट में जो मज़ा आता है वो लास्ट की 6 बॉल में आता है, यू नो. ये जो सॉकर में मज़ा है ना, वो पूरे मैच में मज़ा आता है. मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू कंपैरिजन, बट दैट्स नॉट अ कंपैरिजन. पीपल हु लाइक सॉकर, दे लाइक सॉकर. पीपल हु लाइक क्रिकेट, दे लाइक क्रिकेट. बट माई इंटेंशन इज़ नॉट दैट. व्हाट इज़ माई इंटेंशन इज़ टू बी वॉचिंग एनीथिंग विद द फैमिली, building bonds, you know, building positivity and building health, you know. So if it is for that, please put that in the high importance and low urgency, right? Because आपको entertainment भी चाहिए. Okay, so okay, so what happens now? What you have to do is, आपको अपना 4 कॉलम बनाने हैं, हाई इम्पोर्टेंस एंड लो अर्जेंसी. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हाई इम्पोर्टेंस हाई अर्जेंसी, सेकंड क्वार्टर हाई इम्पोर्टेंस लो अर्जेंसी, थर्ड क्वाड्रेंट लो इम्पोर्टेंस लो एंड अर्जेंसी हाई, एंड द फोर्थ क्वार्टर इम्पोर्टेंस भी लो एंड
अर्जेंसी भी लो, एंड यू हैव टू पुट योर टास्क, आपके 24 आवर्स इसके अंदर डिवाइड होगा, इजंट इट? इन 4 के अलावा 5वां कोई टास्क नहीं होगा। तो आपको इसमें डिवाइड करना है अपना, वेन एवर यू आर फ्री एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू do the time management exercise, so you can do that. Remember, आपको कोई भी टास्क को फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आने देना है, क्राइसिस में नहीं आने देना है, राइट? क्राइसिस सिचुएशन नहीं आए। क्राइसिस सिचुएशन कैसे नहीं आएगी? क्यों? अगर आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क में फोकस करेंगे जब आपके पास टाइम है। ओके, सो रिमेंबर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी टास्क नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी टास्क नहीं होना चाहिए। नाउ द फोर्थ, जो आपके टाइम वेस्टर्स हैं, टाइम वेस्टर्स, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, लिंक्डइन, ये फलाना ढिमका, आजकल पता नहीं कितने कितने। सो ऑल दोज थिंग्स ओनली टू दी बेयर मिनिमम। अगर आपकी ज़रूरत है आप जाइए, अदरवाइज प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। You stop doing these tasks, completely stop doing these tasks. I'm not saying that आप WhatsApp से बाहर हो जाइए, because there are organization which work on WhatsApp. They pass on lot of messages for the employees. So not that, but the extra chatting and all that time wasters if we have. So आपको ये टास्क नहीं करना। Now you see the third quadrant task. Let someone do these tasks for you. Delegation. Now you see, अगर आपको टाइम मैनेज करना है, आपको अगर इफ़ यू वांट टू वाइजली यूज़ योर टाइम, आपके तीनों क्वाड्रेंट खाली रहने चाहिए बस। All 3 quadrants should be vacant. इसमें होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। आपको सिर्फ उन टास्क में फोकस करना है जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस है, जो आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम टू डू दैट। सो फोकस ऑन दोज। डोंट लेट एनी इंपॉर्टेंट टास्क कम टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन क्राइसिस। डोंट लेट इट। हेल्थ, just to give an example, health, don't let health come to the at a situation where you have to be taken to the hospital. No, and it's in your hand. Believe me, I'm telling you, it's in absolutely in your hand. So what you have to do is only spend your time here. Your health is important, so the sleep is important, right? For health, adequate sleep is important. I'll come to that. So you can do this exercise with yourself and be honest, right? Be honest to yourself when you are doing the exercise. And yes, this is what somebody has said. Sleep, I would strongly recommend that you should wake up early, right? Now I'll tell you why you should wake up early, but the most important is you can wake up early only if you sleep well. Then only you can wake up early, right? And you must sleep for 7 to 8 hours. Now आजकल बहुत सारे अच्छे devices आ गए हैं, watches आ गई हैं, which gives you the quality of sleep. So it is not only important that you should sleep for 7 to 8 hours, but you should have a sound sleep. Good sleep, so आपको good sleep कभी आएगा जब आपका माइंड एकदम क्लियर होगा। मतलब कुछ, you don't have to carry the things, because you are not going to solve these problems on bed. अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, या ऑफिस में किसी से लड़ाई हुई है, या आपका ऑफिस में कोई काम पेंडिंग है, आप उसको बिस्तर पे थोड़ी करेंगे बॉस, आप उसको ऑफिस में जाके करेंगे। तो जब ऑफिस में जाके करेंगे, देन यू कैन थिंक ऑफ दैट, नॉट ऑन योर बेड. On your bed, you are the king of yourself. You will only think about yourself, your health. Not even your family, your children, your parents, nothing. जब आप सोने गए, so this is for you, for your health. अगर मैं बता रहा हूँ, so many problems happens because of lack of sleep,
and the lack of sleep happens because there is a lot of things going on in our mind, right? So that produces lack of sleep. Lack of sleep produces, you know, unfocused day, and all these problems arises. So must sleep for 7 to 8 hours, and a sound sleep. And if you sleep well, then only you will wake up well early. And what will you do when you wake up early? When you wake up early, you must do something. You must do something. Either you do meditation, or you do yoga, or you do exercise, or whatever, you know, gym, whatever you want. आपको अपनी बॉडी को आधा 1 घंटा कम से कम देना है बॉस. दिस इज फॉर मेकिंग, दिस इज फॉर ensuring that nobody should take me to the hospital. Nobody should take me to the hospital. You make your target. Then I don't want, you know, I will come, you know, to one of the session, and I'll ask you something very interesting. But you know, the चाहे कितनी अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, अगर आप उसको रफ ड्राइव करेंगे, उसका इंजन बैठ जाएगा, यू नो, 4-5 साल में मज़ा नहीं आएगा आपको चलाने में. लेकिन चाहे कितनी से, यू नो, छोटी से छोटी गाड़ी हो, मारुति 800 हो, you know, I have a Maruti 800 which I bought in 1994, and it starts in 2 to 3 self now, today, because I have taken care of that car, you know. So similarly, this is your body, boss. This is a fantastic body given by the by the God, by the nature to you. Take care of this. So if you take care of this, you will not, nobody will get a opportunity to take you to the hospital, right? So that is the thing, you must do it. And as I mentioned, hobby lobby, you know, you must have something, you know, चाहे वो बर्ड वॉचिंग ही क्यों ना हो, आपको मतलब आपका जो हॉबी है ना, उसको उसके लिए टाइम देना है आपको, आधा 1 घंटा, राइट? Even if it is just watching, sitting in the garden and watching birds, never mind, do that, because this is what you wanted to do. This is what you want to do it. Rest will come, मतलब बाकी जो प्रायोरिटीज हैं वो बाद में आएंगे बस. नंबर 1 आपको सोना है, नंबर 2 आपको उठना है, उठेंगे तभी जब आप सोएंगे बेटर, राइट? और नंबर 3 आपको एक्सरसाइज करनी है, एंड नंबर 4 यू हैव टू डू समथिंग व्हाट यू लाइक टू डू, व्हाट एवर. चाहे आप अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखना चाहते हैं, आप देखिए, आधा घंटा देखिए, 1 घंटा देखिए, वॉट एवर इट इज़, पूरी देखिए, आधी देखिए, यू नो, वॉट एवर यू लाइक टू डू, प्लीज डू इट. दैट इज़ अ हॉबी, you know. Don't. So these 4 things you must not miss. These are mandatory. जैसे हमने लगाया था ना उसमें फिक्स टाइम, ये आपके फिक्स टाइम है बॉस. इसमें से आपको 1 पैसा नहीं लेना है, 1 सेकंड नहीं लेना है, राइट? मैं बता रहा था आपको कि स्लीप का क्या होता है कि, you know, many a times I have lot of presentations to make, you know, and I have deadlines, you know, like tomorrow 10 o'clock I have a session and I have to make the presentations and all that, and I'm in a habit of you know, changing things, you know, making slides better, you know, better understanding, you know, all that stuff. So I have to spend a lot of time, you know. Many times it has happened that it is night, it is 10, my sleeping time is 9:30 to 10, so 9:30 10 I'm to the bed. Now many times it happens that, you know, I have a lot of things to do, and I want to be awake, I want to finish it and sleep. You know, once it was happening and my eyes were closing, you know, just नींद आ रही थी और आंखें खुल नहीं रही थी. My wife came and she said, you please go to the bed. मैं कहा, hey, what are you doing? Tomorrow morning 10 o'clock I have this presentation and this is not complete. She said, you sleep, I'll wake you up at 5 o'clock. तो मैं कहा, नहीं यार, ये गड़बड़ हो जाएगा. कहते, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं होगा, यू गो एंड स्लीप. यू नो, दैट डे आई वेंट एंड आई स्लेप्ट, बिकॉज मेरे को इतना ज़बरदस्त नींद आ रहा था, मैं जाते ही बेड पे सो गया, एंड 5 o'clock शी वोक मी अप. बिलीव मी बॉस, जो 5 से 7 2 घंटे मैंने लगाए ना, मैं वही काम करने में रातों को 11 से 3 बज जाते थे मेरे. आई एम टेलिंग यू द फैक्ट. बिकॉज रात को एक तो आपका माइंड, आपको देख रहे हो, आपको नींद आ रही है, आपका काम नहीं हो रहा है,
राइट, फोकस कम है, सो एवरीथिंग इज एडिंग अप। तो आपका जो 1 घंटे का काम है रात को उसको 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर वही काम आप सुबह उठ के करेंगे तो 2 घंटे का काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। आई कैन वाउच इट। 1 घंटा आपने बचा लिया, स्लीप कम करके नहीं, स्लीप पूरा करके। स्लीप पूरा करके करोगे, यू विल फोकस, यू विल हैव बेटर फोकस। आप कभी भी देखिए, आप 3 बजे सोइए, आप 10 बजे उठिए, 7 घंटे का आपने नींद लिया, लेकिन 10 से लेके 5 बजे तक आपकी आंखें ना ऐसी होंगी जैसे आप सारी रात सोए नहीं है, सो यू विल नॉट हैव काइंड ऑफ दैट सेटिस्फैक्शन। बट अगर आप 9 बजे सो के और 4 बजे भी उठते हैं, 5 बजे भी उठते हैं, यू विल हैव अ डिफरेंट डे ऑल टुगेदर। This is Sir, excuse me, sir. Yeah, Can you please. please show that last 5 slides? last 5 slides. Okay. Yeah. Okay. One is wake up early. Next one, sir. Last. That quadrants. Acha, quadrants. Okay. This one. Yes. Next one, sir. You are showing Yeah. that prayer. Do not let any task come here. That. Oh. तो इसमें तो सिर्फ एक ही फोकस करना है आपको। ये वाला। Yeah. नंबर 2 ना। या नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी फैमिली के लिए, उन कामों पे आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, मैक्सिमम टाइम उन पे स्पेंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई आने नहीं देना है। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है जो आपका लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंसी हाई है, डेडलाइंस हैं, वो आपको किसी और को डेलीगेट करना है। और जो टाइम वेस्टर्स हैं आपके सोशल मीडियाज़ एंड ऑल दैट स्टॉप, वो आपको ख़त्म कर देना है उनसे, या बेयर मिनिमम हो जाइए अगर ख़त्म नहीं करना चाहते। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट बी ऑन इंस्टाग्राम, बी ऑन इंस्टाग्राम, पुट योर फोटोज़ एंड ऑल दैट, बी ऑन फेसबुक में डालिए, लेकिन यू कैन रिड्यूस टाइम। ये सारा टाइम आप अपने फोकस एरिया में लगा सकते हैं। द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू यू, फर्स्ट टू यू, देन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन टू रेस्ट ऑफ, बिकॉज अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आप ही हेल्दी नहीं हैं, आप ही बीमार पड़ गए, तो फिर मतलब देन आपका ध्यान कौन रखेगा पता नहीं, सो डोंट डिपेंड ऑन समबडी। आजकल ये बहुत वो हो रहा है कि प्लीज़ बी इंडिपेंडेंट, डोंट डिपेंड ऑन समबडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बाय योर सेल्फ एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। Right? Can I go ahead? Yeah. Next, sir. Next slide, please. Next. Yeah. Forward, sir. Yes. Thank you. Okay. So wake up early, sleep and do meditation, yoga, and have lobbying, and avoid distractions. During your work, messages coming and all that stuff. So simple thing what you can do is, if there is anything urgent, please call me. सो मैसेजिंग, एक देखने जाते हैं आप व्हाट्सअप का मैसेज और 10 चीज़ें और देखने लगते हैं विच आर नॉट, एंड योर स्पैन, रिटेंशन स्पैन रिड्यूसेस, सो अगेन you have to get focused on the work. Okay. Very nicely put that avoid multitasking. See, we are not made to do multitasking. We are not made to do 2 things at a time. We are God has made us to do thing one at a time. So do things one at a time. क्या होता है कि आप 2 चीज़ें इकट्ठे करोगे तो ना ये पूरी होगी ना वो पूरी होगी, राइट? तो it's like that. So kindly avoid multitasking as far as possible. लेकिन अगर अर्जेंसी है, क्राइसिस है, so you may have to do it. During your break, have Kit Kat. Have a break, have a Kit Kat. That's a very good slogan. Sorry. So whenever you are doing, like you have sessions, 90-minute sessions, then immediately you have a break. So that's a wonderful thing. So when you are doing a task, don't take break because somebody else has given you break. कोई आके आपको डिस्टर्ब किया, चलो यार मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ना, आप अपनी तरफ से ब्रेक लेना है। आप 1 घंटा काम कर रहे हैं, आधा घंटा काम किया, आप 5 मिनट खड़े हुए, पानी का गिलास पी के आए, या वॉट एवर इट इज़, वॉशरूम गए, या ऐसे ही राउंड लेके आ गए, रिफ्रेशिंग योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, नॉट बाय समबडी एल्स इज डिस्ट्रैक्शन, बाय योर सेल्फ इट इज़ rejuvenating yourself. Okay, yes, we have time. So एक
एक सिचुएशन होता है मैनेजिंग टाइम में, प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि जो हम या मैं अभी नहीं करता, मैं इसको बाद में करूँगा, जैसे जैसे मैंने आपको एक बताया था डिसऑर्गेनाइजेशन का, वो उससे कंपेयर मत करिए, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये टास्क है कि लाइक आई वांट टू टेक डिसीजन, लेकिन बट लेट मी होल्ड इट, let me hold, and I want to take decision tomorrow. That's called procrastination. That is keeping the things to decide, and taking time. That is what it means. एंड एडवर्ड यंग है जिन्होंने मतलब टाइम का लिखा है, टाइम मैनेजमेंट का, तो उन्होंने इसको कहा है प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, ये टाइम का चोर है। नाउ this is another different view which we have, and he strongly recommend that you should stop procrastination. Now अगर आप differentiate कर सकते हैं कि disorganization और procrastination, these are two different things. मैं किचन में गया, मैंने ग्लास उठाया, मैंने पानी पिया और उसको मैंने टेबल पे रख दिया. Now that is disorganization. This is not procrastination, but this is disorganization, right? लेकिन I want to buy a car, लेकिन मैंने आज नहीं खरीदी, मैंने उसको कल पे टाल दिया. This is procrastination, right? So hope I am very very clear about procrastination and the disorganization. So and he recommends कि आप ये procrastination को stop करिए. You should stop. Right? So do you think procrastination is bad? Yes? No? Yeah, sir. Yeah? Yes. So procrastination is bad. Okay. Exactly. This is what I differ. Now, but it is not that this is my view, but this is the fact. How do you take the big decisions? जब आपको लाइफ का अच्छा, आपकी लाइफ का बिग डिसीजंस क्या है? आपकी लाइफ का बिग डिसीजंस, 3 बिग डिसीजंस अगर मैं टॉप 3 में डालूं, एक मैरिज, आपका खुद का शादी, और दूसरा आपका जॉब, और तीसरा आपने घर खरीदा, चौथा गाड़ी, समथिंग लाइक. सो टॉप 3, घर, शादी एंड जॉब. सो दीज आर some of the big decisions of your life. Let's take the marriage. So do you marry immediately? That's a big decision of your life. Do you agree? When you meet a girl, huh? Discussion, after discussion, consulting. Yeah. पहला 2-4 दिन, फिर हफ्ता, फिर महीना, यार अभी 6 महीना, आजकल तो साल लोग लगाते हैं. Procrastination. They are procrastinating marriage. All the big decisions, we want time. Exactly, that's what I'm saying. So time factor, वो बोल रहा है प्रोकास्टिनेशन टाइम का चोर है, और वो बोलता है स्टॉप प्रोकास्टिनेशन को रोको, बिकॉज दैट विल सेव योर टाइम. नो, बिकॉज जितना आपका बिग डिसीजंस है, यू नीड टाइम बॉस. लाइफ टाइम का सवाल है. आपने एक बार शादी कर लिया तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट. सो यू वांट टू मेक श्योर दैट व्हाट डिसीजंस यू आर टेकिंग इज द राइट डिसीजन. If you're buying a house, you just don't go, you see the first house and you buy it. Like I said, my need is 1 or 2 bedroom house, छत होना चाहिए, ये है, that's fine. No, when you go to buy a house, you see यार उसके आगे गार्डन है कि नहीं, उसके आजू बाजू कोई शराब का दुकान तो नहीं है. आप उसको अगर घर देखेंगे तो आप पहले सुबह देखने जाएंगे, फिर शाम को भी देखने जाएंगे, फिर रात को भी देखने जाएंगे. आप देखेंगे यार कैसा माहौल है, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड लाइफ देयर. आपको अपना ज़िंदगी वहाँ बिताना है बॉस. तो all these big decisions requires procrastination, that requires taking time, right? So procrastination is not bad. Procrastination, हाँ, जैसा हम कल एग्जाम्पल बात कर रहे थे, if somebody can say okay, yes or no, and he still keeps the file, that is not right. That procrastination is bad. But if you need time to decide on a big decision, you need time, boss. You need time. So you need
procrastinations, right? So you don't take a decision जैसा हमने कल येलो एंड पिंक स्लिप में लिया था, एक चूज़ कर लो, तो ऐसा नहीं होता है ना. जब शादी करनी होती है तो पेरेंट्स डजंट से ये ए या बी, ए से शादी करना है, बी नहीं नहीं. You spend time, so right. So how do we make big decisions? Not with a flip of coin, but and as I mentioned, the marriage, the buying of a house, and all that stuff. Okay, so please don't think that procrastination is bad. Procrastination in some circumstances in big decisions is required. Okay, just to now this is this is one situation. This is an Indian woman cricketer. I'm sure you must recognize her. You must be recognizing her. And there's a situation that she needs 16 runs to win in 5 overs. 16 runs to win in 5 overs. And there is another situation. MS Dhoni is playing and he needs 16 runs in 3 balls. Which one excites you? Dhoni or Mithali? I mean, the situation, please. Dhoni and I know Mithali will excite you, but what I'm asking you, which situation you want to see? Do you want to see, Dhoni or Mithali match? Yeah. Second one. Dhoni. Exactly. Right? Yeah. Exactly. Now you see, what happens is, now I want to communicate 2 things here very easily. Now this 16 runs in 5 overs कोई interest नहीं है, मेरे को भी interest नहीं है, मिताली राज को भी interest नहीं होगा. Now here धोनी को पता नहीं कितना interest है, बट मैंने देखा है धोनी को, ही ब्रिंग्स टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. ऐसा से आपने भी देखा होगा अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो धोनी क्या करता है, वो अपना विकेट संभाल के रखता है. जैसा मैंने उसको देखा, विकेट संभाल के रखता है, और हम जब देख रहे होते हैं ना, हम ये सोचते हैं ये कब मारेगा, एंड वो बंदा जो है ना ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर देता है. अब आप देखिए, अगर 16 रन्स आपको 3 बॉल में चाहिए, you have to hit first ball for 6, you have to hit second ball for 6, and the third ball you can do with 4, but you will try for 6. कि साला कहीं चौका किसी ने रोक लिया तो मैं तो गया, तो मेरे को तीसरा बॉल भी 6 मारना पड़ेगा. तो what I'm trying to communicate here is, when you are under pressure, जब आप प्रेशर में होते हो, आप 3 बॉल में 3 सिक्सेस, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स इन क्रिकेट दैट इज पॉसिबल. यू डू योर बेस्ट. सो व्हेन यू आर अंडर प्रेशर, आप जब टाइम के प्रेशर में हैं, यू विल परफॉर्म बेटर प्रोवाइडेड यू फोकस. लेकिन अगर प्रेशर नहीं है एंड द थिंग्स आर नॉर्मल, you will not put your best. You will never put your best, because you think that yes, there is a time, but I want. Yes, please. Yeah, it is. Yeah, it is going to get over. So I'm sure when the things are see, the end also we are doing the same thing. When you know you can perform better, you should perform better, right? When you know you have the resources, you must focus on them. When you know you have time for your health, you must focus on that. That is what I wanted to say. Thank you so much. So 2 things you must have. You must have the calm mind and the confidence, and you will sail through any situations. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.